this lecture we will see how to create a table in SQL Management Studio and उसमें हम कैसे record insert कर सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए फर्स्ट हमें एसक्यूएल सर्वर को ओपन करना होगा एंड उसके बाद हम ये डेटाबेस वाले ऑप्शन है उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसमें न्यू डेटाबेस एंड यहाँ पे हम अपना डेटाबेस का नाम देंगे. ये वही नेम है जो यहाँ पे है जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर जो ये स्टूडेंट आईडी नेम एनरोलमेंट नंबर डिवीजन सेमेस्टर बर्थ डेट ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर वो सब इसमें कॉलम है एंड क्रिएट अ डेटाबेस विथ नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो ये हमारा डेटाबेस का नाम है जो हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट में बनाने वाले हैं. यहाँ पे हम नाम देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो ये हमारे डेटाबेस का नाम है. आई कैपिटल और स्मॉल में कोई फर्क नहीं पड़ता है बट अब उस स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो पर क्लिक करके यहाँ पे टेबल्स दिख रहा है वहाँ पे हमें टेबल बनाना है. टेबल पर राइट क्लिक एंड आफ्टर न्यू एंड देन टेबल. यहाँ पे हम कॉलम का नाम देंगे STU_ID ये हमारी फर्स्ट कॉलम है. देन टेब स्टूडेंट अंडरस्कोर ID डेटा टाइप इज इंटीजर. उसके बाद कॉलम का नाम है नेम. उसका डेटा टाइप है वेरकेर 100. उसके बाद कॉलम का नाम है एनरोलमेंट नंबर. उसका डेटा टाइप है वेरकेर 12. उसके बाद कॉलम का नाम है डिवीजन. एंड उसका डेटा टाइप है वेरकेर 500 सॉरी 50. उसके बाद कॉलम का नाम है सेम. उसका डेटा टाइप है इंटीजर. उसके बाद है बर्थ डेट. उसके बाद ईमेल. उसका डेटा टाइप है वेरकेर 50. उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर वेरकेर 100 ईमेल. वेरकेर 100. डन एवरीवन. अब हम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की सेट करेंगे. राइट क्लिक ऑन स्टूडेंट आईडी एंड सेट अ प्राइमरी की. इट मीन्स स्टूडेंट आईडी इज अ प्राइमरी की. अब हमें प्राइमरी की को ऑटो इंक्रीमेंट रखना पड़ेगा. उसके लिए हमें करना है यहाँ पे जाएंगे क्लिक करेंगे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन. इज आइडेंटिटी यस इट मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की बाय 1. यहाँ पे हमें हमारा जो नंबर है वो सेट कर सकते हैं. ऑटो इंक्रीमेंट 1 2 3 4 by default is 1. Now we want to save this table. Control S. Name of the table is student. Okay. फर्स्ट हमने क्या किया डेटाबेस बनाया. राइट क्लिक ऑन डेटाबेस एंड नेम ऑफ द डेटाबेस. आफ्टर दैट राइट क्लिक ऑन टेबल
एंड क्रिएट अ न्यू टेबल। उसमें हमें जो भी कॉलम चाहिए थी वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे जो भी कॉलम चाहिए थी उसका नाम मैंने उसका डेटा टाइप प्रोवाइड कर दिया। एंड अब हमें देखना है कि ये कॉलम टेबल बना या नहीं, तो उसके लिए राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, देन क्लिक ऑन प्लस आइकन and see dbo.student. It means our table is created successfully. अब dbo.student पे राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रो। अब हमें यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। स्टूडेंट आईडी इज 101। ये रिकॉर्ड जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो हम इस टेबल में इंसर्ट करेंगे। स्टूडेंट आईडी इज 101 101। हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी वो हमने प्राइमरी की सेट की है, नॉट में इंक्रीमेंट सेट की है। इट मीन्स ये बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर देंगे, हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एनरोलमेंट नंबर डालेंगे 0902 0902 0902 00107051 00107051। 12 digit division BCX3 same 3 birth date 1992 12 6 1992 12 6। Then tab name is 49 at the rate gmail.com. Search 49 at the rate gmail.com. Contact number 8866205253 8866205253। सी our student ID is 1। इट मीन्स हमने जो वहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में 1 सेट किया था, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट 1। इट मीन्स यहाँ पे पहला रिकॉर्ड 1 आ गया। अब हमें सेकंड रिकॉर्ड में भी स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम टैब आफ्टर टैब इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट। सेकंड रिकॉर्ड इज फिरोज एएश फिरोज a.x 090200107090 0902000107090 090। सॉरी यहाँ हमने नेम में सेट कर दिया। कंट्रोल एक्स कंट्रोल जेड ये हमें दोबारा करना पड़ेगा। 090200107069 I guess 90। Sorry for that 90। Then tab
VCX3 semester 3 birth date 19940503 1994 after that email firoz.me@gmail.com. So, firoz.me@gmail.com. Then contact number 8885 8885 999922 9999 522. See, here too. It means primary key is auto increment. Now we want to add our third record, which is Krunal Vyash. Krunal Vyash. After that, enrollment number 0902431 0902431 0902431 0107101 07101. BC here BCY, sorry for that, and third record is BCZ. BCZ 3. Here not BCX, BCY. BCY 3. Here semester is 5. 19840301. 19840301. उसके बाद हम अपना ईमेल प्रोवाइड करेंगे krunal.vyas@gmail.com. .vyas@gmail.com. After that, contact number 099990888877 9990888874 77. Our 3 record is inserted successfully. अब ऐसा नहीं कि हमें 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, आपको जितने मन चाहे उतना रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें देखना है कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं या नहीं, तो उसके लिए फर्स्ट हम करेंगे न्यू क्वेरी एंड राइट क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम our table name is student, 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 and after that execute that query. It will provide 3 records जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किए थे। अब ऐसा नहीं कि मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, आप भी 3 करोगे, आपको जितना मन चाहे उतने रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार इट मीन्स ऑल डेटा। यहाँ पे हमें देखिए स्टूडेंट आईडी, नेम, एनरोलमेंट नंबर, डिवीजन, सेमेस्टर, बर्थ डेट, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब हमने प्रोवाइड कर दिया। So this is all about how to create a table and how to record insert. If you want any query, then you can comment with me. I can reply any comment. अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसे रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।